we have continued with the chapter 16, that is light chapter. So today's topic will be a reflection of light. In the last class we have studied about the rectilinear propagation of light. So come on, answer me, what is rectilinear propagation of light? Yes, what is rectilinear propagation of light? जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे, that we will continue today. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है? व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट? द लाइट which always passes in a straight line, that is known as rectilinear propagation of light. Yes, good morning all. I'm asking you a question. In the last class we have studied rectilinear propagation of light. Come on, say me, what is rectilinear propagation of light? What is rectilinear propagation of light? The light which passes in a straight line, that is known as rectilinear propagation of light. Yes, good noon all, good morning, good noon. Today we are going to study about reflection of light. What is reflection of light? When a light will passes, when the light falls on a object or on a mirror. Okay, when light falls on an object, we take an object. Okay, so जैसे ही light, I take sunlight. Okay, when it falls on an object, okay, when it falls on an object, तो ये light क्या होता है? Bounce back होता है. This light will bounce back. Bouncing back of light on other, like for on our eyes. वो यहाँ बाउंस करता है अपने आंखों पे, तब जाकर के हम लोगों को ये चीज दिखाई देता है. यस नो? तो द बाउंसिंग बैक ऑफ द फॉलिंग लाइट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, द लाइट दैट रिफ्लेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन आर नोन एज रेक्टिलिनियर. ओके, गुड मुस्कान. ओके, नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल कर रहा है. ओके, तो जैसे कि अभी आई टुक सनलाइट ऑन यू, व्हेन सनलाइट इज फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो ये लाइट क्या होता है? बाउंस बैक करता है, यानी कि पीछे की तरफ या दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाके पड़ता है. जैसे कि अगर वो अपने आंखों पे पड़ता है तब जाके हम लोगों को वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. यस नो? दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अंडरस्टूड? जैसे कि हम एग्जाम्पल दिए थे, डार्क रूम है और उसमें एक कॉपी या किताब रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है. ओके, और हम लोगों को वो दिखाई नहीं दे रहा है. जब रूम डार्क है और बुक रखा है, वो कहाँ है? हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है. जैसे ही एक रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट जब उसमें पड़ता है तो क्या करता है? जैसे ही वो लाइट जाके उस बुक पे पड़ेगा तो बुक उसको बाउंस बैक कर देगा. बुक का जो लाइट होगा वो बाउंस बैक करेगा अपने आंखों पे और अपने उस सरफेस एरिया पे. तो जैसे ही वो लाइट अपने आंखों पे पड़ता है, वी कैन सी दैट बुक. यस नो? यस और नो? जिस तरह से हम लोगों को वो बुक दिखाई, जैसे ही उस अंधेरे रूम में जैसे ही बुक पे कोई प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? वो लाइट जब बाउंस बैक करता है तो उसके इर्द गिर्द जितने ऑब्जेक्ट सब्सटेंस रहते हैं उस पे वो लाइट फॉल करता है. और जब हम लोगों के आंखों पे वो रिफ्लेक्टेड लाइट आता है तब जाकर हम लोगों को वो बुक दिखाई देता है. दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. समझ में आया आप लोगों को? यस?
Everyone understand? Next, let us see activity 5, the page number 185 में वो है आपका क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस किस तरह से इक्वल होते हैं जब वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो उसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि हाउ डज ही रिफ्लेक्टेड लाइट विल be equal to the angle of incidence and angle of reflected ray. तो वो एक्सपेरिमेंट है इन एक्सपेरिमेंट 5 that how does an ray or angle of incidence will be equal to the angle of reflected light. Understanding? Okay. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 185 में एक्टिविटी 5. Can you all see here? ये एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है जहां पे वहां पे प्रूफ किया गया है कि हाउ डज एन एंगल ऑफ रे, रिफ्लेक्टेड रे विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ द इंसिडेंस रे. अंडरस्टैंडिंग? और वो कैसे होता है? इन द सेटअप ऑफ एन एक्टिविटी 4 मार्क द पोजीशन ऑफ द मिरर एज mn. ओके, अब mn जो है वो पोजीशन ऑफ मिरर है. M और N जो है वो पोजीशन ऑफ मिरर है. जैसे कि एक्टिविटी 4 में किया गया है, टेकिंग द मिरर एंड जस्ट ओके मार्क द पोजीशन एज MN विद अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग ए स्केल एंड अ पेंसिल. मार्क द पाथ ऑफ इंसिडेंस एज AO. AO जो है समझिए कि ये पाथ ऑफ इंसिडेंस है, रे ऑफ इंसिडेंस है. ओके, उसके बाद में एंड रिफ्लेक्टेड रे OB. जब ये रे ऑफ इंसिडेंस है यानी कि जो लाइट में फॉल कर रहा है वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है हमारा OB. दिस इज रे ऑफ इंसिडेंस और दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे और M और N जो है वो पोजीशन ऑफ मिरर है. उसके बाद कॉल द पॉइंट ऑफ at O, कॉल द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ड्रॉ ए लाइन OX परपेंडिकुलर टू M. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब यहां से वो क्या है? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पे रे फॉल कर रहा है. अब यहां से O और X एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है perpendicular to MN. Okay, see that both should be equal. अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि now at the normal point of measure AOX you will find that these angles are equal. Thus we can say that the reflected ray leaves the mirror at the same angle at which the incident ray strikes it. तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि जैसे आप मिरर लेके जब वॉल पे if we जैसे कि एक मिरर लेते हैं और जब इस पे रे ऑफ लाइट फॉल हो रही ये रिफ्लेक्ट करता है, दोनों का बीच का एंगल जो होता है वो इक्वल होता है. यानी कि जब रिफ्लेक्ट करता है वो वाला पोजीशन और जो आके लाइट स्ट्राइक करता है वो पोजीशन दोनों इक्वल होता है. अब देखिए, अब वो जो मिरर का पोजीशन है दैट इज योर M and N. ओके, और जब इस मिरर पे रे ऑफ इंसिडेंस यानी कि रे ऑफ इंसिडेंस यानी कि जो लाइट प्रकाश उस पे पड़ रहा है, जो लाइट रे इस पे आ रहा है, मार्किंग एज A and O. अब ये वो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब यहाँ से जो लाइट रे ऑफ रिफ्लेक्ट कर रहा है बैक दैट इज योर OB पॉइंट. ओके, अब O जब ये इंसिडेंस ऑफ पॉइंट हो गया तब O और एक से परपेंडिकुलर लाइन होगा MN के लिए और इसका बीच का जो एंगल है ओके एंगल AOX एंड एंगल XOB जो ये एंगल है वो इक्वल होगा. यानी कि जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है
always equal. That proves that it is always equal. Measure करिएगा आप लोग angle, it will prove that it is equal. Understanding? That is your proof of angle of incidence and angle of ray, reflected ray. Now next topic is real and virtual image. अब real image क्या है और virtual image क्या है? Let us know about that topic. Real image and virtual image and virtual image. रियल इमेज यानी कि जो असली इमेज होता है दैट, एंड वर्चुअल इमेज यानी कि वी कैन आभास होता है, वी कैन वहम टाइप, वी कैन इमेजिन. अंडरस्टैंडिंग विच इज नॉट स्टेशनरी, वी कैन जस्ट इमेजिन. ओके, सो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए रियल इमेज, जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, जब स्क्रीन पे प्रोजेक्टर लाइट जब डाला जाता है, प्रोजेक्टर लाइट, you can see the screen on the wall. Yes, no? तो वहां पे इमेज फॉर्म होता है. That is your real image. Yes, no? जब तक वो प्रोजेक्टर रहेगा तब तक उस स्क्रीन पे आपका लाइट यानी कि आपका इमेज इट विल बी. यस ना? ऐसा नहीं है कि स्क्रीन कहीं पे चला जाएगा या स्क्रीन के पीछे जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कहीं छिप जाएगा. नो, इट विल नॉट नो. बट वर्चुअल इमेज जो होता है, एक इमेजिनेशन, आभासी जो होता है, हम लोग इमेज कर सकते हैं. जैसे कि अभी हम लोग मिरर के सामने खड़े हैं तो एक इमेज फॉर्म हो रहा है. यस नो? और जैसे ही हम लोग मिरर से पीछे हटते जाएंगे, यू फील दैट इमेज भी हटते जाएगा. यस नो? और जब कोई हम लोग मिरर के पीछे चले जाएंगे, यस, तो वहां पे कोई स्क्रीन फॉर्म नहीं होगा, ना ही वहां पे कोई इमेज होगा. वहां पे सिर्फ हम लोग एक आभास कर सकते हैं. यस नो? बट यहाँ जो प्रोजेक्टर वाला लाइट है, स्क्रीन वहीं पे रहेगा और स्क्रीन पे वहां पे इमेज फॉर्म होता है. अंडरस्टैंडिंग? और until and unless you won't take out the projector, that screen और इमेज कहीं नहीं जाने वाला है. It will be there only as it is. चाहे प्रोजेक्टर को आप किसी भी मोड पे घुमाइए. यस नो? ना ही वो स्क्रीन हटने वाला है, ना ही वहाँ का इमेज आगे पीछे होने वाला है. अंडरस्टैंडिंग? बट जब आप मिरर के सामने खड़े रहेंगे और जिस तरह से आप पीछे की तरफ जाएंगे, आपको लगेगा कि मिरर से भी इमेज कहीं दूर होते जा रहा है. और जैसे ही आप इमेज के पीछे यानी कि मिरर के पीछे जाइएगा, योर इमेज विल बी इनविजिबल. वहाँ पे कोई स्क्रीन फॉर्मेशन नहीं रहेगा या फिर आपका कोई इमेज नहीं रहेगा, एक बस इमेजिनेशन रह जाएगा. सो दैट इज योर वर्चुअल इमेज. यानी कि आप जो सी द इमेज फाउंड बाय अ प्रोजेक्टर इन द सिनेमा हॉल इमेज इज अ रियल इमेज. इट इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन. वो एक स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा है. बट वर्चुअल इमेज में क्या है? सच द इमेज सीम्स टू बी इमेजिनरी, कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन. जैसे कि अभी मिरर है लेकिन वहां पे कोई इमेज फॉर्म ही नहीं हो रहा है. दैट इज योर वर्चुअल इमेज. वी कैन इमेजिन. अंडरस्टैंडिंग? और जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा है, जैसे वॉल अभी स्क्रीन हो गया और आपका प्रोजेक्टर लाइट जब करता है, यू कैन सी द इमेज ऑन द स्क्रीन. ओके, चाहे प्रोजेक्टर को इस तरफ ले जाइए आगे पीछे, आपका स्क्रीन पे उतना ही इमेज चलता रहेगा. इट विल नॉट अनविजिबल. बट ऑन मिरर, जब तक आप मिरर के सामने नहीं जाइएगा, योर इमेज विल बी एंड इट विल इनविजिबल आल्सो. अंडरस्टूड? ओके. The next properties of image formed by a plane mirror we will study in the next class. Okay, so let us see chapter 15. Chapter 15 का जो notes है, we do it. Take everyone chapter 15 so that we can do the notes. तो अब समझ में आ गया ना? What is reflection of light? What is real image, virtual image, and how does a reflected ray? अब लाइट चैप्टर का एक बार we have studied reflection of light. Then we have studied the ray of incidence,
is equal to ray of reflected light. Ray of reflected. उसके बाद में we have studied real image and virtual image. Okay, properties of image form. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने देखा है जब एक लाइट एक ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और जब वो जो ऑब्जेक्ट का लाइट जब बाउंस बैक करता है किसी अदर सरफेस एरिया पे, देन दैट पर्टिकुलर वे इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, रे ऑफ इंसिडेंस is equal to ray of reflected on a given particular object or a screen. Then real image and virtual image. Understanding when an image is formed when image is formed on a screen, then that is known as a real image. Okay, and when image which is not formed on the screen will be your virtual image. Understood everyone? Okay, the next, the properties of forming image on a plane mirror we will study in the next class. Now we will go on to the chapter 15 notes. Wind strong and cyclones. Okay, aiming. Okay. Air exerts pressure in. Come on, answer me. Air exerts pressure in. Yes, all direction. Your answer is option A. In all direction. Then second question. Low atmospheric pressure exists on the earth in which of the following latitudes? Low atmospheric pressure exists on the earth in which of the following latitudes? Option D, at the equator and at 60° north and south. Second one's answer is option D, at the equator and 60° north and south. Okay? Yes. Next, third one, which of the following are not associated with cyclones? Which of the following are not associated with cyclones? Your answer is option D, volcanic eruptions. Third one, option D, volcanic eruptions. Volcanic eruptions. Okay. Next, fourth one. Development and movement of cyclones are studied by the answer me. Development and movement of the
Okay. Come on, say me. Answer me. Development and movement of cyclones are studied by the dash. Indian Meteorological Department. Yes, Indian Meteorological Department. Fourth one is option C. Indian Meteorological Department. Okay, next. Your next question is, which of the following state of India is most likely to hit by a cyclone? It is option C. Which state? For fifth one. Yes, it is. Answer is option C, Andhra Pradesh. Next, sixth one. Sixth question is, a piece of plywood is kept on a table. You have to lift it from the table by blowing air over it at very high speed from a powerful fan. In which direction will you blow air? In the sideways. Yes, no? Sideways. The seventh question is, the fact that increased wind speed result in reduced air pressure is known as Bernoulli principle. Seventh one, the answer is option B. That is your Bernoulli principle. Okay. Then eighth question. Which of these best describes a tornado? So your option D, rotating funnel. Rotating funnel of high speed wind 10 to 2000 meter across. Kilometer across. Okay. So this was your answer for 8th question. That is option B. Rotating funnel of high speed wind 10 to 200 meter across. Okay. So now this was your answers for A main. Now let us see for B main. Very short answers, options. So I'll ask you the question. If you know, you can answer me. If not, I'll write it on the board so that you can write the answers. Okay? So your first question is, does air temperature increase or decrease as you go up in the atmosphere? As you go up in the atmosphere, the air temperature will increase or decrease? It decreases. Yes. First answer is decrease. Then second question. Your second question. Does air pressure increase or decrease as you go up in the atmosphere? Air temperature also decrease and air pressure also decrease. So your answer will be yes, decrease. Okay, the next question will be, a rubber sucker pressed on a flat surface
sticks to the surface because air pressure inside it is dash more or less than the air pressure outside. It will be more or less. It will be always less because the inside pressure will always be the lesser. Then fourth one, the faster the air moves, the dash is the pressure. जितना फास्ट एयर मूव करता है उतना उसका स्मॉलेस्ट प्रेशर रहता है. Your answer will be smaller. The next fifth question. When air expands, it rises up. True or false? जब air expand होता है on heating, so it will obviously rises up. So your answer will be true. Then sixth question is, where is the air pressure higher, at the equator or at the poles? Air pressure कहाँ पे high होते हैं? At the poles. At the poles. So you can have a look on the answers. The first answer will be your degrees. Second will be degrees. Third, less. Fourth answer, smaller. Fifth one, true. Sixth one, at the poles. Okay? The next seventh question. Monsoon winds flow because of uneven beating of land and sea water. Sea or water. Okay. Then eighth one, lightning is an electric spark between clouds. It is true. The ninth one, calm conditions do not prevail anywhere in the cyclone. False. Then cyclonic winds tend to circulate around the eye on the cyclone. Okay? So this was about your answers of A and B main. So for your PT4, as I said, your chapter 11 and 12. Okay? Today's homework will be your learn and write. You have to learn and write once again the short question and answers. Short question and answers of chapter 12. One time. Understanding? So whatever we are giving or whatever we are discussing, that you all have to know it properly. See, after your 16th life chapter, last one 17th chapter will be pending. So after completion of that, we will do some basic. Like if I ask you now also the basic topics, some topics, you will be not able to answer me. So सारे chapters after we complete your syllabus, how much we have been planned for our this particular session. तो उसके बाद we will do the basics. Okay, now let us see. Name any four natural hazards. Come on, say me any four natural hazards. So we can say earthquake, flood, drought, cyclone. Yes, no? So see me, we can say the four natural hazards are earthquake, जो कि भूकंप है, earthquake, flood, drought, cyclones, etc. Okay, so the four major natural hazards are earthquake, flood, drought and cyclones. Okay, earthquake means you all know that's bhukam, then flood, baढ़, drought, sukha, cyclones, chakravat. Understanding? And what will be your next question? In which direction does air exert maximum pressure? In which direction air exert pressure? In all directions. Second answer. Air exerts pressure in all directions. In all directions. Understanding?
we know that air exerts pressure in all the directions. Then what is the next question? The speed of wind in a region suddenly increases. How does this affect the pressure in the region? This will reduce the pressure in the region. What does the effect will be? This reduce the pressure in the region. Okay, so this reduce the pressure in the region. So this is your third question answer. Then fourth one, why does heated air rise up? Because when air is heated, it expands. This causes it becomes lighter than surrounding coolers. ओके, देखिए जब एयर हीट होता है तो वो क्या हो जाता है? एक्सपैंड होता है, यानी कि इट विल बिकम वेरी लाइटर. उसके बाद वो क्या हो जाता है? ऊपर राइज हो जाता है. अंडरस्टैंडिंग? सो व्हेन एयर इज हीटेड इट विल एक्सपैंड एंड इट विल बिकम लाइटर, and because of that it will rises up so that the cooler air comes and occupies the space. Fifth question, what causes monsoon winds? What causes monsoon winds? Monsoon winds are caused by uneven heating of land and sea. So fifth का जो आंसर है, monsoon winds are caused by uneven heating of land and sea. Monsoon winds are caused by uneven heating of land and sea. Okay, so this is your fifth answer. Okay, rest all you can mark it. Sixth one, what causes lightning? So the static electricity is produced. That question you can say. Then why does cyclone become weak once it hits land? What causes a tornado to be forced? These questions I'll just give you hint in the next class. Long question answers you have to do it by yourself. Long question answers of chapter 15. Do it by yourself. Got it? Okay. So after this we will wind up with the topic here. The next class we will continue the light chapter. That is your properties of how the image forms on a plane mirror. Now everyone just submit your attendance with your section and class roll number. Send me the attendance. Okay, all have given your attendance list. Okay students, so we will wind up our online class for today here itself. In the next class we will continue. Thank you all. Have a nice day. Bye all.